Hello friends, today we will learn about reactivity series of metals and their displacement reactions with the help of Nobita and Jian. Yes, you heard me right. Reactivity series is nothing but an arrangement of metals according to their order of reactivities, which means the most reactive metals will be present at the top and the least reactive will be present at the bottom, as shown in the picture. Now we will use Nobita and Jian to understand the concept better. Jian will symbolize more reactive metal and Nobita will symbolize less reactive metal because of their body structure. लेट अस सपोज कोई रिएक्शन में दो मेटल्स की बात हो रही है, उनमें हम एक को मानेंगे जियान, एक को हम मानेंगे नोबिता। जियान हम मानेंगे उसे जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है और नोबिता वो होगा जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होगा। आया समझ? लेट अस सपोज नोबिता यानी कि लेस रिएक्टिव मेटल चेयर पे बैठा है और जियान यानी कि मोर रिएक्टिव मेटल बाहर से आता है। सो जियान बीइंग फैट एंड मोर रिएक्टिव नोबिता को इजीली उसकी चेयर से हटा देगा। दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड केस जिसमें जियान चेयर पे बैठा है और नोबिता बाहर से आता है। कॉन्टेम्पलेट योरसेल्फ कि क्या नोबिता जियान को उसकी चेयर से हटा पाएगा? आंसर इज अ बिग नो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रिएक्शन इन बिटवीन कैल्शियम एंड जिंक। Calcium being above zinc in the reactivity series will be acting as Jian and zinc will be acting as Nobita. The chemical reaction is occurring in between calcium and zinc sulfate, in which calcium, which is Jian, is coming from outside and try to displace Nobita, that is zinc, and it will be very easy for him to do that because Jian is more reactive as compared to Nobita. Let us take another example in which copper, that is Nobita, tries to react with ferrous sulfate. In this case, we will observe that there will be no reaction because Nobita, being weaker than Jian, cannot displace him. Thank you so much and follow my channel for more such videos.